Okay, so in the last lecture, in the last 15 minutes, we actually started with a new topic, and it is an important topic. Okay, so this is isometric projections. I'll give a very brief overview of what we did in the last 15 minutes of the last lecture, and then we'll start adding knowledge to this concept now. Okay, so I hope you remember we started with this idea of projections where we had, I would say, an observer, we had an object, and we had a plane of projection. And then we developed an idea about orthographic projections. We also understood what's perspective projection, but we are majorly dealing with orthographic projections, where we talk about the orthogonal rays of sight, or we say that the projectors are parallel to one another and they are perpendicular to the screen of projection. And then based on orthographic projections, we went on to section of solids, which is an add-on to orthographic projections. But we majorly dealt with orthographic projections and its idea. So उस व्यू के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ आई वुड से टॉक अबाउट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू. ठीक है. And we talk about this multi-view projection system. Reason being, we want details about each and every dimension. So if I say right in front of your screen, if this is, I would say, अब तक जितने भी questions आपने attempt किए हैं, this is what you get in terms of your tutorial sheet or your AutoCAD assignment. And then you are asked to basically draw the front view and the top view. And in addition to that, sometimes the side view. But now in isometric drawings, what are we going to do is we're going to reverse the process. We are going to give you the front view, the top view, and we'll ask you, now you need to construct the isometric view. So ये view क्या है, इसके क्या perspectives हैं, क्या technicalities involved हैं, this is what we are going to study in, I would say, the next 2 or 3 lectures. Now, right in this particular, I would say, case, we actually drew this object in the isometric version in a very informal way. ठीक है, हमने अभी तक कोई टेक्निकल वर्ड नहीं यूज किया, कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं की, but just in a very informal way I asked you to how would we draw this like object, and I told you कि we'll first draw a box type of a thing. और इस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो बॉक्स की जो प्लेसमेंट है, इट हैज सम लाइक पर्टिकुलर थिंग्स इन इट. इसकी ओरिएंटेशन का कुछ इशू है, लाइक देयर इज सम टेक्निकलिटी इन्वॉल्व, बट वी विल नॉट गो इनटू इट. हम थोड़ा इनफॉर्मल रहेंगे कि हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया, लाइट ऑब्जेक्ट, and then I asked you which dimensions can you see in this particular object. So we were able to see these dimensions very clearly. We can see the other dimensions as well, but the, I would say, edges, if I say that I need to construct this box, वो edges आपको clearly visible है कि this edge will be 90, this edge will be 40, this edge will be 30, which can be viewed from the top view. And then we said कि let's say this box is constructed with a 3H pencil जब आप manual drafting कर रहे हो, so that's why it's light in color. अब मैं कहता हूँ H pencil लेते हैं और H pencil के साथ हम सारे edges को dark करना शुरू करते हैं. So we go by this idea. We darken this edge, we darken this edge, we darkened this edge. We know what's the length. This is 50. ठीक है, हमें पता है कि ये 50 है. And then we went on to add this edge. We know the length is 20. यहाँ से पता है कि ये 20 की dimension है. And then we joined it. We do not need this dimension. We know that it has to intersect at this particular lightened edge. And then we connected this edge as well. और इसकी भी dimension की हमें ज़रूरत नहीं है because हमें points ही connect करने थे. And then we also went ahead to darken this edge because we know this is 30 units. And then this edge parallel line draw करनी थी, इनको join करना है, नीचे project किया, यहाँ से भी हमने extend कर लिया because box हमने proper dimension का बनाया हुआ है. So this way we completed this object in the last lecture. All right. Now the idea was to convert the front view and given front view and top view into an isometric drawing. Isometric drawing के अंदर basically आपको एक complete representation मिल रही है. ठीक है? So when I say the word complete representation, can you tell me like what do I mean by that? If I ask you technically कि complete representation कैसे मिल रही है? Anyone? Like whatsoever vague idea you have captured up to now. Like मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को complete information मिल रही है, but ठीक है, but why am I doing isometric drawing? मैं क्यों बना क्यों रहा हूँ? मतलब why am I teaching this? Sir, because designs are made on a 2D paper only. Okay. Yeah, you're going in the right direction. What else?
So obviously the 3D object, so we need the 3D view of an idea of how the 3D view would look like. I would say that's also correct. What else? अगर हम आई वुड से इंजीनियरिंग ड्राइंग की टर्म्स में बात करते हैं, उसमें कैसे बताओगे? आपने जो बोला बिल्कुल करेक्ट बोला है। अब मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के टर्म्स यूज करके मुझे बताओ कि ये है मेरे पास, मैं ये क्यों बना रहा हूँ? सो ताकि सिंगल व्यू में हम देख सकें। यस, इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ व्यूज, आई वुड से यहाँ पे मेरे को एक फ्रंट व्यू बनाना पड़ रहा है, एक टॉप व्यू बनाना पड़ रहा है। ठीक है, मैं सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहा हूँ, बट जैसे स्टूडेंट्स ने जो फर्स्ट स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स ने आंसर किया, वन, मेरे को उसकी कंप्लीट शेप एंड ज्योमेट्री एक ही व्यू में देखने को मिल रही है। जो दूसरे स्टूडेंट ने बात की, मेरे को फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तीनों व्यूज का एक आइडिया एक ही व्यू में लग रहा है। All right. So when you have a complex geometry or a complex part, it's better to go with isometric drawings. ठीक है? अगर आपको कहीं presentation देनी है, you will prefer a isometric drawing and not the front view and top view. When you have to go to a manufacturer or a, I would say CNC operator, he will need these drawings. But for, I would say, a commercial PPT में आपको basically you will go for a isometric drawing. If I go for a very layman explanation, ठीक है? But the technical answer is कि इसमें सारे views capture हो रहे हैं. ठीक है? All right. So let's practice one more example in a very informal way. But यहाँ पे, yeah, before we move further, last time भी मैंने आपको point out की थी कुछ चीजें कि हमारी observations क्या हैं. So हमारी यहाँ से observations ये हैं, orientation. हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी lines हैं, one, point है कि ये बड़ा simple object है. So इसकी सारे surfaces जो हैं flat surfaces हैं, ठीक है? So इसके अंदर ये point ध्यान में रखना है for the observations that I'm about to list out. The observations are कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जितनी भी लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं, वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे है, चाहे वो नीचे का एज है, चाहे वो ऊपर का एज है, चाहे ये वाला एज है, बिकॉज दे आर पैरेलल, सो इट हैज टू हैपन, बट दे आर इन अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, इवन दिस एज एंड दिस एज। जितनी भी लाइंस वर्टिकली अप जा रही हैं, वो भी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, मतलब वो परपेंडिकुलर ही जा रही है। कोई भी लाइन ऊपर गई, दे आर गोइंग इन अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एक्सटेंशन लाइंस को भी देखें, डायमेंशन लाइंस को भी देखें, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम पैटर्न। यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखा जाए, ये भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सो देयर इज समथिंग अबाउट आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स दैट वी आर कैप्चरिंग फ्रॉम दिस particular example. Let's replicate all these ideas to a new example and then we'll go into the technicalities. ठीक है? So let's say this is the object now. ठीक है? So पहले क्या होता था, आपके पास और ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी, फिर आपको बोला जाता था कि आप इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाइए एंड यू कैन इजीली कंस्ट्रक्ट इट. बट नाउ वी रिवर्स द क्वेश्चन. वी से this is what you have in front of you. Give me the isometric drawing for this particular multi-view system. So again, we'll go by the same idea in an informal way. I'll say, let's construct a box first. ठीक है? In order to construct that box, मुझे एक orientation चाहिए. Let's go for that orientation. So that orientation is being captured by this particular line here, and this particular line, this particular line. So we can see यहाँ पे कुछ particular angles involved हो रहे हैं. We'll study them on the very next slide. ठीक है? And then what's the next step? We basically I would say, go and construct that vertical line as well. और नीचे एक box create करते हैं. All right. Can anyone let me know what's this dimension? How much ये dimension कितनी होगी? What's the measurement of this? 40, 40, And this one 40, 40, and this one. 40. 40. So it's a square edge. All right. So be careful कि यहाँ पे जो भी दिख रहा है, and in the next 2 or 3 slides, I'll talk about with that this will actually not be 40 when you will be drawing it, but you're correct as per now on the slide. ये 40 का ही box बनाएंगे, ठीक है? Then we'll go vertically upwards. We'll go vertical up here, vertical up here, and vertical up here. So what's this particular dimension? All these dimensions. This one, what's this? How much? 60, And this much? 6, And this 60, much? 60. Okay, correct. So यहाँ पे भी, can we say that we can basically join these like this? ठीक है? Now suggest me the next step. What should I do next now? How can I get the geometry that I'm So looking we here? can draw Mhm. we can draw smaller square inside. कैसे? Where should I keep my pencil? कहाँ जाऊँ मैं? From the bottom, Okay, here.
No, sir. Bottom base. Bottom base. Okay. What should I do now? अगर आपको ये क्वेश्चन मैं दूं, like help me construct this. What are your suggestions? Carefully look at it and then let me know. So we will draw a circle so that it fits the outer square, and Okay. in the center of it, uh, we will draw a square of 20 length. Center of it. Partially correct. थोड़ा सा उसमें We can प्रॉब्लम आ remove the सकती है. center from it, Hmm. and through that we can draw the square, the inner square. Okay, you're basically meaning a square inscribed in a circle, right? That methodology? Yes, yes. Yeah, can be done. I would say correct. That is another way of doing it. I didn't practice that one here. मैंने दूसरा way लिया है. But there are two ways only. एक आपने बताया. I would say absolutely correct. और इसी को अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करके सोचो कि जहां जहां पे वो टच कर रहा है, मतलब आपका स्क्वायर के जो पॉइंट्स हैं, लाइक यहाँ पे कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं? पहली बात, ये सबको समझ आ रहा है कि वो स्क्वायर अंदर बनेगा, ठीक है? जैसे ये हमने आउटर पेरिफेरी को टच कर दिया, वो स्क्वायर तो अंदर बनेगा. सो हाउ कैन वी गो अबाउट इट? कैन आई से कि आई कैन बेसिकली टेक बाइसेक्टर्स. एक बाइसेक्टर यहाँ लेते हैं, एक बाइसेक्टर यहाँ लेते हैं. कैन एनीवन टेल मी द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट नाउ? We can use वो 20 उसका 10 लेके दोनों साइड पे we can वो Parallel lines draw करेंगे 10 centimeter length में. Perfect. So we basically move. complete the square. Yeah, we'll take 4 points. We'll take a point here, 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 where I would say these distances, this here, this distance here, from this edge, यहाँ से इस edge का ये distance यहाँ से और ये distance यहाँ से. This is what you're calling 10, right? Yes sir. Yeah, you're absolutely correct. ठीक है, so this is how you proceed further. आप basically यहाँ पे 4 points draw करोगे, और 4 points draw करने के बाद the next step would be you basically draw parallel lines, ऐसे जैसे student ने suggest किया. One, this one, the other one would be this one, the next would be this, and the other would be this. And once you have these lines, now you have the square with you. Okay? So I'm just trying to inculcate that idea of having that creativity. थोड़ा visualization करना आना चाहिए, because the questions will not be that simple in your like exams and stuff. थोड़ा सा पता होना चाहिए कि perpendicular bisector ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं. So now you basically move further and you join these lines. Okay? So you join this one, darken it out, darken this one out, darken this one out, and remove the portions that you cannot see. And I would say the final step would be, this is what you get. All right. So agar aapko roughly idea diya jaye, so this is how you can construct. But if I go back 2 steps, do remember when you look at this figure, I would say 2 further steps, that again you're following that same convention कि आप basically एक particular directions में ही line को draw करते जा रहे हो. चाहे आपने ये वाली line भी draw की यहाँ पे, I would say this one, or I would say this particular line. They like for this particular line, this is basically parallel to this line. All right. And this particular line, and I would say this particular line, are having the same orientation. ये red color में मैंने जितनी भी तीनों lines draw की हैं, if I delete the other one, I would say all these 3 lines are in a particular set of orientation. And I would say if we take a different set of color, I would say this particular blue line, this particular blue line, this particular blue line, this particular blue line, I would say this particular blue line and this particular blue line. All of them are having the same orientation. ये चीज को थोड़ा सा विजुलाइज करना सीखो, बिकॉज आपने अभी तक जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की है ना, उसकी जो आपके ग्रिड शीट होती थी, वो ग्रिड शीट डिफरेंट होती थी. उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही होती थी. यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा आपको. तो आपकी बेसिकली मैनुअल ड्राफ्टिंग में या जब आप ऑटोकैड में जाओगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए, आपको एक जो ग्रिड बनेगा आपका, वो एक ओरिएंटेशन में बन रहा होगा. नाउ लेट्स गो टू दैट ओरिएंटेशन कि ये क्या हम इतनी देर से जो इनफॉर्मल बात कर रहे थे, लेट्स फॉर्मलाइज इट नाउ. ठीक है. So I'll move to the next slide. Anyone having any doubts up till now? Okay. So what is an isometric drawing?
So it is a type of pictorial projection in which all three dimensions of an object are shown in one view, and if required, their actual sizes can be measured directly from it. तो आपको जो मैंने पहले बताया था कि आपके तीनों व्यूज जो हैं वो एक ही व्यू के अंदर आप ऑब्जर्व करते हो, एंड द मेन आइडिया इज कि आपके पास बेसिकली तीन डायमेंशंस, आई वुड से द three principal dimensions: length, depth, and height. They can be visualized in just one pictorial representation, and that's what you call as isometric drawings. Because पहले क्या होता था, आपके पास फ्रंट व्यू है, सो इसका अगर मैं लेट्स से फ्रंट व्यू की बात करूंगा, यू कैन जस्ट सी द लेंथ, आप लेंथ देख सकोगे फ्रंट व्यू के अंदर. इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रंट व्यू, आप लेंथ देख पाओगे और हाइट देख पाओगे. बट इफ आई गो इनटू, आई वुड से द साइड व्यू, अगर आप इस साइड से देखोगे, what information can you capture? You can just capture the height and you can capture the depth. So हर व्यू में एक dimension miss हो जाती है. All right. Now coming to the next point is that in this particular 3D drawing, what happens is that all three dimensional axes are maintained at an equal inclination with each other. So this is the nomenclature. वो जो मैं आपको informal बात कर रहा था orientation की, now we have started talking about it. वो कह रहा है कि आपका basically जो तीन principal directions हैं, I would say this is your one particular direction, this is the other particular direction that I'm talking about, and this is the other particular direction I'm talking about. They are all inclined. If this point is basically located at this point, let us assume as a hypothetically this point and this point are exactly the same. So आपकी तीन principal directions जो हैं, they are oriented at 120 degree each. So this is what you call as the concept of isometric drawings. Anyone having any doubts in it? इसमें अभी बहुत ज़्यादा information मैंने add करनी है, but just a overview कि ये angle जो आपको था वो मैंने introduce कर दिया. This is 120 degree. So any concerns about this? All good? Okay. So now let's move further. So this is what I've been talking about कि अगर आपके पास सिर्फ front view और top view होता है, so you can capture just this information. In the front view, you can see the length and the height. In the top view, you can just see the length and the depth. एक dimension completely miss हो जाती है, and that's why you go for isometric drawings जिसमें आपके पास तीनों dimensions capture करने की capability है. All right. So let's say we talk about this particular case now. So now let's formalize whatever we were talking about earlier. I would say, let me take a different pen. It's read me thoda ho raha hai. So I would say let's focus our attention to this particular point. Let us assume कि यहाँ से है. So I would say, can I draw a horizontal line, something like this, and then a vertical line, I would say something like this, and I would say a line which is basically going about this direction and this direction, I would say something like this. Can anyone tell me what angle is this and what angle is this? What is the angle on the right hand side? How much would be this angle? 30. 30 degree. 30. Anyone having any doubts कि ये 30 कैसे आया? And what would be this? 30. किसी को कोई doubt कि ये दोनों angles 30 कैसे हैं? Anyone having any doubts should refer to this figure. This is what I have done. ये पॉइंट पे यहाँ पे मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ की है. So this angle is 90. This angle is 90. So that's why this is 30 and this is 30. Similar thing is being applied here. This angle is 90. This angle is 90. This angle is 30 and this angle is 30. So I hope अभी सभी इसके साथ correlate कर पा रहे होंगे. When I come back here and say these are 30 and 30, this is what I mean. ठीक है, इसको नीचे भी extend करके check कर सकते हो. So कोई डाउट किसी को कि 30 डिग्री का एंगल कैसे आया? बिकॉज नाउ व्हेन यू वेंचर इनटू आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. यू बेसिकली गो ड्रॉ, टेक अ लाइन लाइक दिस एंड ड्रॉ दीज थिंग्स. ऑलराइट, ये आपका पहला, जैसे कहते हैं कि मतलब फर्स्ट रिलीजियस स्टेप दैट यू नीड टू डू व्हेन यू आर आस्क्ड टू डू अ लाइक आइसोमेट्रिक ड्राइंग, एंड यू क्विकली कंस्ट्रक्ट दीज लाइंस एट 30-30. एक बेस लाइन और दो लाइंस इस तरह से, और यहाँ से आपकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग स्टार्ट होती है, एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोना टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. But this is, I would say, the first step. ये जो नीचे मैंने आपके लिए ड्रॉ करके दिखाया. All right. So let me now clean it up a bit. So यहाँ पे what are the observations जो हमने पहले डिस्कस की हैं basically, I would say. So you can see the dimensions. This one, this particular edge right here,
this particular edge is again inclined at 30 degree. All right. Even this particular edge is inclined at 30. कैसे? यहाँ पे ये angle और ये angle same है. All right. Even this particular edge is basically at the same angle. ये angle सारे same है. When I say the angle, I'm talking about this, 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 and this. ठीक है? Now let me erase it. किसी को कोई doubt कि all these angles will be same? They are all oriented in 30 degree direction. कोई question? All right. इसमें questions अगर हैं पूछ लो. I would say it's a bit tough. ये वाला topic थोड़ा सा previous topic से ना different है. Again, when we talk about the other ones, I would say let's talk about this edge right here. इसकी orientation 30 पे. When we talk about this particular edge, इसकी orientation 30 पे. ये edge भी parallel है. Again 30 पे. ये edge भी parallel है. Again 30 पे. All right. So most of these, अब यहाँ पे जब हम इसकी बात कर रहे हैं, let's say the edge at the back, let's take a different color. Now this particular edge, sorry, this one here, right here, this is again 30. किस तरह से? इस तरह से, ये वाला angle जो यहाँ पे draw करते हैं. So this angle and this angle, they are all the same. All right. So ये orientations को थोड़ा सा ध्यान से देख लो. Let me erase everything now. Also, the vertical edges, they are all parallel. All right. So if I talk about this one, up, 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 and up, all the vertical edges, they're all vertical. All right. My drawing is a bit hazy, but they're all vertical lines. All right. Now let's come to the extension lines. Extension lines के अंदर यहाँ पे भी आप देखो जो एक्सटेंशन लाइंस हैं, यहाँ पे अगर मैंने इसकी डायमेंशन आउट करनी है, वो भी अगर आप ध्यान से देखो, दे आर फॉलोइंग द सेम नॉमेनक्लेचर. सो दिस इज द मिस्टेक स्टूडेंट्स यूजुअली डू मैनुअल ड्राफ्टिंग या एग्जाम्स के अंदर. अब मैं आपकी मिस्टेक पॉइंट आउट करने लगा हूँ. सो बी अ बिट केयरफुल एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो. So you are supposed to do this, what I just highlighted, but what students will do, sorry, what students would actually do is, I would say, they'll mark this as like, यहाँ पे इसको ऐसे किया, and they'll mark this. This is wrong. ये कोई orientation नहीं है आपकी. All right. So you cannot do this. Or the other mistake students usually do is like they will pull out the extension lines in the correct format. जैसे ये extension lines यहाँ से नीचे ठीक आ रही हैं. But instead of marking out this dimension, they will mark out this dimension. This is again wrong because this is the base and this is the hypotenuse. तो आपने यहाँ पे ये जो dimension mark की है, this is wrong. ये नहीं करना. Both these things, यहाँ से कोई orientation को अगर आप break करके जा रहे हो, वो 30 degree line से अगर आप parallel नहीं जा रहे, आप गलती कर रहे हो. All right. I would say the same for other things as well. So अगर अब मैं आपसे पूछूं, if I say, well, let's go to this and let's say we have to mark out this particular dimension. So ये वाला. All right. If I have to mark this one out, what should I do? Should I do this? Going parallel to these lines, or I would say, let's take another line. I would say, or should I do this? And mark it here. The green one or the blue one? Green one. Anyone voting for green? Why? कोई भी रीजन बताओ. तो जो हमने आपने पहले बताया था जो फ्रंट व्यू में जो हमें दिख रहा है उस साइड में, वो भी हमने इसी डायरेक्शन में किया है पैरेलल. So and you told that the other convention is wrong, so that's why. What if I say दोनों correct है? How many of you agree to that? For me. Yes, sir. Sir, वो दोनों correct है. Only drawing the blue one might be a bit inconvenient because it's backwards. I would say let's not talk about convenience. Let's just talk about being technically correct. Yes, so technically दोनों correct है. Yeah. So these both They lines both seem correct. both are correct. So Sir, it will they are- depend. Sir, they are also both were correct because if we think
another side? नहीं, अगर if you're talking about, I would say यहाँ पे जो मैंने draw किया था, this one, Yes नहीं, sir. it would be correct if I draw, I would say, let me take another color. If had I drawn this purple line ना, Yes sir, you have drawn like this. अगर ये पर्पल लाइन ड्रॉ करूं तो पर्पल करेक्ट है, बट अगर मैं ग्रीन वाली की बात करूं, ग्रीन वाली इनकरेक्ट है. अगर मैं ये डायमेंशन मार्क कर रहा हूं, ग्रीन इज इनकरेक्ट, द पर्पल वन इज करेक्ट, क्योंकि पर्पल वन इज फॉलोइंग द कन्वेंशन ऑफ 30 डिग्री. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल 30 डिग्री का है, बट जहां पे ये ग्रीन लाइन की बात कर रहे हैं, मैं इससे बाहर आ गया, मैंने एंगल ही डेविएट कर दिया सारा. So the green one is incorrect at this point, but the purple one is correct. If I talk about these two lines, both of them are correct. It will depend कि आपकी convenience, जैसे उन्होंने कहा, वहां पे अगर बहुत सारी dimensions highlight हो रही हैं, तो आपकी convenience होगी कैसे आप उस dimension को अच्छे से represent कर सकते हो. But both of them are correct. All right. So be careful about this. But हमेशा point क्या है, हमारी convention 30 डिग्री वाली convention को मैं नहीं छोड़ रहा कहीं भी, चाहे वो मेरी लाइंस पैरेलल है, चाहे कुछ है, चाहे एक्सटेंशन लाइंस है. ऑलराइट, सो एनीवन हैविंग एनी डाउट्स एट दिस पॉइंट? यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए स्टूडेंट्स की तरफ से, यूजुअली आता है, लाइक do you, anyone who would like to like point out to a particular scenario or something? कुछ ऑड नहीं लग रहा अभी तक हम जो कर रहे हैं, इसमें एक चीज आपको पूछना ही नहीं चाहिए. Think about it. What could be that thing? Yeah, let me rephrase the question. What situation would not be ideal for this 30 degree convention? मतलब अभी तक जो हमने डिस्कस नहीं की, what could be that situation? Give it a thought. कि अभी तक हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, what is one thing we haven't touched upon? Anyone? Vague idea. कुछ भी बोलो, कोई बात नहीं. Height, if the figure is already inclined at an angle or something. I would say थोड़ा सा इसको और रिफाइन करो इस स्टेटमेंट को. थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन. थोड़ा और रिफाइन करके एक सिनेरियो बोलो कि सर ये सिनेरियो हो तो I So would. in case the figure is not in a shape of cuboid, it is some other shape. Yeah, what shape? Correct. क्या सही बोल रहे हो? You're moving So in the like right something direction. circular or Perfect. Yeah. Perfect. So I would say questions usually ये होता है कि sir, what if this is a circle? How would you go for an isometric view? Circle का कैसे बनाओगे? या if you have a arc, उसको कैसे ये 30 डिग्री से ओरिएंट करोगे? या सर अगर यहाँ पे एक रिब बना दिया आपने, ये रिब कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? Like you're getting this idea कि अभी तक हमने जितनी भी बात किया उसमें अगर ये let's say this was a rib or something like that, या कोई सर्कल होता या कोई आर्क होती, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो नहीं होगी when we will go for the formal way. जब हम formal way स्टडी करेंगे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. But yeah, intuitively students usually ask this question here. All right, so that is something I was trying to highlight. बट आई होप एवरीवन गेट्स द आइडिया कि ये मिस्टेक्स जो आप करते हो एग्जाम्स में या मतलब मैनुअल ड्राफ्टिंग के ट्यूटोरियल्स में, दिस इज समथिंग यू नीड टू अवॉइड. सो लेट्स मूव फर्दर नाउ. ऑलराइट, so isometric drawing में the three lines, if I talk about this cuboid, the lines AL, I would say this one, the line AD and AH, they are meeting at a point A and they are making 120 degree angles with each other. I hope this makes sense. Now the lines parallel to these axes are called isometric lines. So अगर AL के कोई पैरेलल लाइन है, लेट्स से AL के पैरेलल लाइन कौन सी है, ये वाली, या कोई और पैरेलल लाइन हो, सो दीज लाइंस, या आई वुड से AD के पैरेलल लाइन कौन सी है, ये वाली, या AH के पैरेलल लाइन कौन सी है, आई वुड से ये वाली और ये वाली. देयर आर अदर लाइंस एज वेल, बट ठीक है. So these lines which are parallel to these axes, they are called isometric lines. और axes किसे बोल रहे हैं, AL, AD, AH को. Now the planes representing the faces of this cube are as well, and other planes parallel to these planes are called isometric planes. So when I say planes, I'm talking about this plane, I'm talking about this plane, and I'm talking about this plane. So ये red color से जो मैंने तीन planes mark किए हैं, so these are called as isometric planes. So ये point समझ में आना चाहिए. All right.
सो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रही है कि बेसिकली हमें 120 डिग्री के ऊपर अपनी एक्सिस को ओरिएंट करना है और वहां से ड्राइंग स्टार्ट करनी है। पर ये बात समझ में आनी जरूरी है कि ये 120 पे आने का प्रोसीजर क्या है, हम कैसे पहुंचते हैं। ऑलराइट, लाइक हाउ डिड यू गेट टू दिस ओरिएंटेशन? सो it is a very technical thing, but I'll give you, I would say, a brief idea. थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा with the help of a drawing. All right, give me 1 second. So let's say you have a structure in front of you which looks something like this. All right, it's a cuboid measuring 600 by 300. I don't know why I'm missing on this dimension. This is 400. ठीक है, पीछे इसकी जो depth है वो 400 है. So if I ask you what's the front view, if I'm looking from this direction, इस direction से इसे देख रहे हो, so this will be the front view of this object. So front view में आपको length दिख रही है 600, आपको height दिख रही है 300, depth missing है. If I ask you what's the साइड व्यू होगा इस तरफ से. ऑलराइट, ये तरफ से अगर मैं देख रहा हूं, मेरा एरो आएगा इस तरफ पॉइंट करेगा. सो माय साइड व्यू वुड बी बेसिकली यहां से. सो यहां पे मेरे को 300 की हाइट दिख जाएगी, डेप्थ दिख जाएगी 400 की, 600 मिसिंग हो जाएगा. ऑलराइट, अब बात आती है कि वो ओरिएंटेशन जिसे मैं कहता हूं बेसिकली आइसोमेट्रिक ओरिएंटेशन. सो दिस इज द आइसोमेट्रिक ओरिएंटेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ये आ कैसे रही है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट मी पुट इट इन द साइड व्यू फर्स्ट. I would say let us consider a scenario. All right, we have, I would say, let me take a paint. Just so अगर मैं कहूँ कि आप जाते हो बेसिकली एक फोटोग्राफर के पास जाके आप अपना एक आई वुड से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवाते हो. ठीक है, सो यू हैव अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व्हिच इज आई वुड रिप्रेजेंट एज P. एक फोटोग्राफ ये होती है. I would say now you have mobile phones with you, you have a camera in front of it. Most of you would be interested in clicking selfies or like other things. I would say एक आप selfie खींचते हो. All right. So this is I would call as a selfie. So do you think they are same or they are not the same? If we talk in terms of engineering drawing, are they representing the same projection system or not? But they are representing the same projection system, only aspect ratio is different. Okay. और कौन सा प्रोजेक्शन सिस्टम को रेफर कर रहे हैं ये दोनों? सॉरी सिद्धार्थ, आपकी आवाज नहीं आई मुझे. क्या कह रहे हैं? Sir, the P side, I think. Hello, sir. I'm audible. हाँ, सॉरी, मेरा ही कनेक्शन लूज था. हाँ, बोलिए बोलिए. Sir, I was saying that the P side represents the first angle projection and the S side represents the third angle projection. नहीं, I'm talking about orthographic projection system, isometric projection system, perspective projection system. उस साइड में बात कर रहे हैं. But I would say let's be specific about orthographic and I would say isometric. Sir, isometric. Let's first talk about the passport size photograph. आप सबने passport size photograph खिंचवाई है. Is this orthographic projection or an isometric projection? I think orthographic. Correct. When I go about a selfie, is this an orthographic projection or an isometric projection? Be careful. आप selfie खींचते कैसे हो? अपने hands की orientation ध्यान से सोचो कैसी होती है. क्या करते हो? At an angle. I think it's at an angle. Okay, बिल्कुल correct. So, is this an orthographic or an isometric? Isometric. Yes, so they're not the same. So एक है आपकी ऑर्थोग्राफिक क्यों है? क्योंकि आप जाते हो एक चेयर पे सेट डाउन कर जाते हो, एक कैमरा पर्सन आपके सामने होता है, वो कैमरा बिल्कुल आपके फेस के बिल्कुल प्रोजेक्टर्स रेज ऑफ साइट जो कैमरा से निकलेंगी बेसिकली आपकी जो फ्लैशलाइट फॉर एग्जांपल, दे विल बी अलाइंड. ऑलराइट, परफेक्टली अलाइंड होती हैं, जिसके कारण आपकी जो प्रोजेक्शन बनेगी, आई वुड से लेट्स से यू हैव अ स्क्रीन एट द बैक ऑफ यू, तो वो स्क्रीन के पैरेलल जाएंगी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई जब आप सेल्फी लेते हो, just imagine if you're standing somewhere, what do? You never keep the camera right in front of your face. आप पहले अपना हाथ, I would say just hold your camera in front of you. You'll basically tilt the hand right side पे थोड़ा सा जाते हो. I'm usually like if a right-handed person is there. And what's the second step? You usually take the hand above. आप ऊपर कर लेते हो. So let's say you have a camera in front of you. You basically move your hand right and then you move the camera above. So that's what you call as isometric. Reason क्या है? आप ज्यादा features capture कर रहे हो.
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में आपका सिर्फ फेस का हाइट दिखेगा, फेस की विड्थ दिखेगी, डेप्थ नहीं दिखती। सेल्फी के अंदर आपको तीनों व्यूज का थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होता है। नाउ लेट्स गेट इनटू द सेम आइडिया, इट्स एन लाइक एनालॉगस सिचुएशन जो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। लेट्स अज्यूम दिस इज अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ आपको कि बेसिकली आप सिर्फ अभी ये 400 का विड्थ देख पा रहे हो यहाँ पे, और बेसिकली 300 देख पा रहे हो। सो सेल्फी खींचनी हो तो क्या करोगे, आप इसे राइट मूव करते हो थोड़ा सा, ऑलराइट, और राइट मूव करने के बाद आप अपना हाथ ऊपर लेके जाते हो, ऑलराइट। कैमरा ऊपर करोगे तो जो फोटोग्राफ आएगी वो कैसे आएगी, ये नीचे हो जाएगा। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स कि मैंने क्या किया? मैंने थोड़ा सा उसे राइट मूव किया और फिर अपने हाथ को ऊपर किया। दिस इज हाउ यू क्लिक अ सेल्फी, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आपकी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अब आपको तीनों फेस दिखने शुरू हो गए। एंड इफ आई गो बाय द एक्यूरेट ओरिएंटेशन, दिस इज द एक्यूरेट ओरिएंटेशन। I went right to certain angle and then I went up by certain angle. ठीक है, you need to remember these two statements. आप right गए एक certain angle से और आप ऊपर गए एक certain angle से। जब आप ऊपर लेके जा रहे हो कैमरा, तो आपका बेसिकली फेस जो ऊपर वाला फेस है वो नीचे की तरफ टिल्ट हो रहा है। Anyone having any doubts at this point? I'll repeat again. You move your hand right, so you move right, and then you move your hand up. जैसे ही आपने हैंड अप मूव किया, ये बॉक्स को मैं नीचे, मेरे को ऊपर से व्यू ये दिखेगा ना मेरे कैमरा को, तो सो दिस इज व्हाट आई गेट टू सी, एंड द परफेक्ट ओरिएंटेशन विद ऑल द परफेक्ट एंगल्स, जैसे वो 120 डिग्री जैसे मैंने बोला था, कुछ और एंगल्स इन्वॉल्व है। सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी, ऑलराइट। कोई डाउट किसी को या कोई प्रॉब्लम कि ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बन रही है? बिकॉज अब नाउ आई गो इनटू द एंगल्स, द पर्टिकुलर वंस, कि ये कैसे मूव करते हैं। ऑल गुड? नाउ लेट्स मूव टू दैट स्लाइड देन। So this is a cuboid. I would say you have three figures in front of you. You have figure 1, you have figure 2, you have figure 3. Let's first talk about figure 1. जब हम figure 1 की बात करते हैं, so you have a cuboid, you have this face, यहाँ पे ये face की बात हो रही है। ये face की अगर मैं यहाँ से observer हूँ, या I would say if I'm observing it from here, any direction, choose anything. Let's say I'm choosing this one. So आपको ये face की projection यहाँ पे दिखेगी। Can anyone let me know what's the यहाँ पे I would say, let me take the line. Sorry. So ये जो length यहाँ पे है और ये जो length यहाँ पे है, are they the exact same dimension or is there any difference? Same. Yep. So can I say all the 4 dimensions that I see here, they are the true representation, they are the true dimensions of this, or of these all 4 faces? Can I say that? Yes, sir. Correct. Now let's talk about this point. I told you कि आप अपना hand right move करते हो, हम यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा मूव करेंगे। सो यहाँ पे यही सेम क्यूबॉइड को मैंने मूव किया, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ऑलराइट। मैंने एक सर्टेन एंगल पे से मूव किया, दिस इज 45 डिग्रीज। मैंने 45 डिग्रीज पे से मूव किया और फिर इसका प्रोजेक्शन लेने की कोशिश की यहाँ से। तो आपको अगर ये आपका फेस 1 है और ये इधर वाला फेस अगर 2 है, कैन आई से दिस इज 1 एंड दिस इज 2? Anyone having any doubts? Yes or no? No, sir. No, ठीक sir. है। सो यहाँ से आपको 2 फेसेस दिखने शुरू हो गए। मैंने उसको थोड़ा सा टिल्ट किया, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को भी ऐसे ही टिल्ट किया था, मुझे 2 फेसेस दिखने शुरू हो गए थे, याद है? जो भी मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ब्लॉक दिखाया था। एंड देन Yes. यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको कहा था सेल्फी खींचते वक्त आप अपना हाथ ऊपर लेके जाते हो। सो बेसिकली यू मूविंग द कैमरा अप, यू मूविंग द ब्लॉक डाउन। सो यू कैन सी यहाँ पे बेसिकली in this particular cuboid that you see, there is only one point, and that is here. If I take a different color, let me take a different color, I would say red, जो सिर्फ उसकी सरफेस को टच कर रहा है यहाँ पे एक, बाकी सारा अब क्यूब हवा में उठ गया बिकॉज मैंने थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया। एंड इफ आई टेक, आई वुड से मैं यहाँ से इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ, यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं जो ये ब्राउन फेस के ऊपर से जा रही है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन ब्राउन फेस के ऊपर लाई कर रही है, और ये एंगल को अगर मेजर करने की कोशिश करूँ, ऑलराइट, this is I would say 35 or 35 something, I don't remember the exact, it's on the next slide. ये एक एंगल है, particularly nomenclature का पार्ट है। So you see this particular angle here which is basically which this block is making, and इसका जब प्रोजेक्शन हम यहाँ से लेते हैं, this is what you get to see।
आपको 3 फेसेस दिखने शुरू हो गए। यहाँ पे आपको एक फेस दिख रहा था इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, एक फेस, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 2 फेस, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 3 फेसेस, जिसके कारण अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर फोकस करूं, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये चीज, लेंथ, डेप्थ, हाइट 120 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल्स हमने माना कि 45 थे, 35 थे। ये फिजिकली ऑब्जेक्ट को हमने ओरिएंट ऐसे किया, पर उस फिजिकल ओरिएंटेशन की प्रोजेक्शन जब हमने अपने प्लेन के ऊपर ली, तो हमें ये 120 120 120 मिलते हैं। किसी को कोई डाउट ये समझने में? आई रिपीट इट टुमारो, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट यहां तक कोई डाउट? आई डेफिनेटली रिपीट इट टुमारो। Sir, I just had to ask, what is that 35.16 angle with? यहाँ पे ये ब्राउन फेस देख रहे हो, आई वुड से अर्थ, लेट्स से द ग्राउंड। Yeah. सो ये लाइन हाँ ग्राउंड के ऊपर हाँ जी, हाँ पैरेलल जी। कर सकते हैं, ठीक Okay. है, विच इज बेसिकली ऑन द ग्राउंड। ये वाली लाइन मैंने ग्राउंड से ड्रॉ की है पैरेलल, मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑलराइट, मैं इस साइड से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसको ऐसे समझो, यहाँ Okay. पे ये बी पॉइंट है, ठीक है, जो बी एज है, Yes, sir. बेसिकली वर्टेक्स। वहां से अब ये पॉइंट के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अगर मैं इसे साइड से देखूं, दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉन। ये वो ग्राउंड वाली लाइन है और ये वो बी वर्टेक्स वाली लाइन है। ये एंगल Okay, got साइड it, से sir. दिखेगा ये, Yeah, okay, got it, sir. ऑलराइट। मैंने उसको क्यूब को हवा में कर दिया ना थोड़ा सा, मैंने एक एज की टिप यहाँ पे रख के, यहाँ पे इसकी टिप यहाँ पे होल्ड कर लिया, पीछे से क्यूब ऊपर उठा दिया, Okay, got it, sir. और पिछले स्टेप में 45 डिग्री पहले ही रोटेट कर चुका हूं मैं। सीक्वेंस है, 1 में सीधा सीधा रखा, 2 में इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके 45, चारों वर्टेक्स यहाँ पे अर्थ पे लाई कर रहे हैं या ग्राउंड पे, चारों के चारों वर्टेक्स, ठीक है। बट यहाँ पे फिर मैंने Yes, बी, sir. सी और ए ये हवा में उठा दिए, सिर्फ एक वर्टेक्स जो यहाँ पे है वो टिप लाई कर रही है। और फिर मैं इधर से आ गया और मैंने कहा इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं इस प्लेन के ऊपर यहाँ से, तो ये प्रोजेक्शन मिल जाती है। ये वो प्रोजेक्शन है जो मैं आपको पहले 2 स्लाइड्स में समझा के आया हूँ, ठीक है। इसको कल दोबारा रिपीट करते हैं, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। यहाँ से ही कल स्टार्ट करेंगे, आई नो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, सो विल स्टार्ट ओवर फ्रॉम दिस स्लाइड अगेन, ऑलराइट। ऑलराइट, थैंक यू गाइस। So I'll end the Thank you, session. sir. Yeah. Thank you, sir.